Okay, students, welcome into a new lecture regarding strategic studies, and that is massive retaliation, a nuclear doctrine. Before uh, this, we have already discussed the other related doctrines, nuclear doctrines. Now, today, we are going to discuss massive retaliation, what it is. So, let's start. Definition. Massive retaliation, it is known as massive response or massive deterrence. It is a military doctrine and a nuclear strategy in which a state commits itself to retaliate in much greater force in the event of an attack. यानी आप एक हमले के वक्त आप एक बड़ी सख्त तरीके से रिटेलिएट करते हैं। ठीक है जी। और अमेरिका की बात करें कोल्ड वॉर के दिनों में तो आइजनहैवर एडमिनिस्ट्रेशन developed the concept of massive retaliation during the Cold War. यानी कोल्ड वॉर में अमेरिका की आइजनहैवर जो सदर आइजनहैवर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने ये कंसेप्ट लेकर आई थी और प्रेसिडेंट आइजनहैवर बिलीव्ड इन कंटिन्यूइंग द कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रूमैन्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन ये थी कि यूएसएसआर की कम्युनिज्म को कंटेन किया जाए तो इसने भी प्रेसिडेंट आइजनहैवर ने भी इसको इन्हेंस किया और which committed the US to stopping the containing the spread of communism in the world. Taham, President Eisenhower worried that the biggest threat to our country's security was not the union of the socialist Soviet Socialist Republic in USSR nahi hai itself, but the US might overspend itself trying to fight the Soviets. ठीक है, might overspend itself trying to fight the Soviets. आगे massive retaliation was an all or nothing strategy. किस तरह से? It was the threat to turn the Soviet Union into a smoking, radiating ruin at the end of the 2 hours. By making nuclear war too destructive to fight, by making the distinction between victor and the loser in such a conflict increasingly meaningless, the deterrent strategy aimed at eliminating war itself. Furthermore, and more concretely, massive retaliation meant the possible deterrence of an all-out attack. So, massive retaliation reflected a policy of brickmanship. Brickmanship आगे मैं explain भी करूँगा. The expectation was that by going to the brink of war, the US would be able to deter future Koreas. ठीक है जी। Massive retaliation was an all or nothing strategy. किस तरह से है कि it was the threat to turn the Soviet into smoking, uh, radiating ruin at the end of the 2 hours. Massive retaliation reflected a policy of brinkmanship. The expectation was that by going to the brink of war, that the US would यानी टू कोरियाज में फ्यूचर कोरियाज में अमेरिका को ले जाने से यानी वो बाज रहे वो ऐसा काम ना करे। ठीक है आगे यानी ब्रेकमैनशिप क्या है? It is ostensible escalation of threat to achieve one's aims. The word was probably coined by Adlai Stevenson in his criticism of the philosophy described as going to the brink in an interview with Secretary of State John Foster Dulles under the Eisenhower administration during the Cold War. ठीक है जी। Massive retaliation might have been a successful policy for keeping the Cold War in balance. यानी ना अमेरिका ऊपर जाए और ना सोवियत यूनियन ऊपर जाए and an option for stopping a major Soviet advance into Western Europe. यानी डोमिनो थ्योरी अमेरिका की काम कर रही थी कि सोवियत यूनियन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कहीं दाखिल ना हो। अगर वो दाखिल हो गया तो इससे कम्युनिज्म फैल जाएगी और इनकी कैपिटलिज्म को और इनके जो इत्तेहादी मुल्क हैं इनसे टूट जाएंगे, खतरा हो जाएगा। तो उसकी एडवांसमेंट को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया। Although it was never put to this test, but it did not answer everything. यानी कुछ काम बेहतर किया इन्होंने। मैसिव रिटेलिएशन आल्सो नोन एज मैसिव रिस्पॉन्स यानी बड़ा रिस्पॉन्स है ना एक खतरे के पेश नज़र और मैसिव डेटरेंस है is a military doctrine and a nuclear strategy in which a state
commits itself to retaliate in much greater force in the event of an attack. यानी आप एक हमले के वक्त आप retaliate करते हैं और एक बड़ी ताकत के जरिए आप retaliate कर रहे होते हैं. To what extent was massive retaliation able to contain limit challenges? To what extent was massive retaliation able to contain limited challenges? The threat of massive retaliation could not prevent limited challenges. यानी इतना तो नहीं रोक सकता है. बहरहाल it was not an effective foreign policy tool to deal with everyday problem. यानी हर मसले का हल तो था नहीं. Short of an ultimate provocation, the Soviet Union could raise tension and challenges the US as the Korean War already had shown, and future crises involving Berlin would again prove. यानी जो आईआर की हिस्ट्री से हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको इन इन इश्यूज के बारे में सही पता होगा, वो समझ रहे होंगे, या मैं इनके लिए एक अलग से लेक्चर भी तरतीब दूंगा. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, more limited responses were necessary to deal with less than total challenges. The Soviet Union successfully tested American resolve several times. On 17 June 1953, it suppressed an anti-communist revolt in East Berlin, and in late 1956, it suppressed a national uprising in Hungary. What were the mistakes of massive retaliation? First, massive retaliation lowered US credibility. इसने अमेरिका की credibility को बड़ा मुतासर किया. It was not credible to threaten the Soviet Union with massive retaliation in the face of its growing strategic power. Even if US politicians really meant it, people in other capitals would not believe it. If the threat was losing credibility in the eyes of the very nation it was supposed to deter, then the policy of had lost its meaning. So, second, massive retaliation increased the vulnerability of the opponent. As a consequence, the US Strategic Air Command (SAC) was becoming more vulnerable to a surprise attack. If the Soviet Union felt insecure because of the massive retaliation, Moscow might decide to strike first. For growing vulnerability could be strong incentive for such a first disarming strike. ये पहली गलती उनको पहली और दूसरी गलती थी. अच्छा, massive retaliation. Why was massive retaliation so attractive? Massive retaliation was attractive because it was containment on the cheap. यानी कोई काम किए बगैर ही आप उसको कंटेन कर रहे हैं अपने दुश्मन को. It also was an attempt to explain the Korean War. Korea would never be happened. Korea would never have happened. The argument went had the communists known that the US would retaliate. So when allies feared a lack of American commitment to extended deterrence, it could be explained, or at least it could be declared away with excuses. We had a communication problem. The other side did not know that we were deadly serious. Nuclear deterrence. अच्छा, was massive retaliation at all credible? क्या इसका वो कोई था? तो massive retaliation was only plausible as long as Soviet Union could not retaliate. जिस वक्त तक Soviet Union ने retaliate नहीं किया तो ये बड़ा वो था. In other words, it was based on the assumption of US territorial invulnerability. During the Cuban Missile Crisis 1962 में ये हुआ था. This assumption was challenged. अब ये ज्यूम किया जा रहा था कि नहीं होगा, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में तो ये हो गया, ये टूट गया. और सोवियत यूनियन वांटेड टू मेक द यूएस टेरिटोरियली वल्नरेबल करना चाहता था, टू द एक्सटेंट दैट इट itself was territorially vulnerable to Western delivery system in Europe. ताहम सोवियत यूनियन launched its first intercontinental ballistic missile ICBM 57 में इंस्टॉल किया था इसने. That means that long before the Cuban crisis and at the time that massive retaliation was announced, the military strategy was questioned by the people who designed it. ठीक होगी बात. सोवियत आईसीबीएम्स जो उन्होंने इंस्टॉल किया था 1957 में कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका के खिलाफ, द टेरिटोरियल वल्नरेबिलिटी ऑफ द यूएस, यानी इस आईसीबीएम ने अमेरिका की कमर तोड़ दी. अमेरिका की टेरिटोरियल इन वल्नरेबिलिटी को उसने चैलेंज कर दिया, थ्रेटन कर दिया. And the question came up with whether the US would risk nuclear suicide for the sake of its allies. ऐसा करेगा कि नहीं करेगा न्यूक्लियर का इस्तेमाल.
or US willingness to sacrifice New York for Berlin seemed implausible. So, Taham, Soviet ICBM diminished the credibility of extended nuclear deterrence. For US allies, the specter was raised that US military strategy might move from a deterrence posture to a defense posture. ये बड़ी जबरदस्त बात है। यानी अब डेटर्स पोस्ट उनकी इस हरकत से या डिफेंस से अब डेटर से अब डिफेंस पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे और दिस चेंज इन स्ट्रेटेजी जो अमेरिका की उस जमाने में थी कोल्ड वार के इस दौरान हाउ एवर इम्प्लाइड द कंसिडरेशन ऑफ यूरोप एज अ फ्यूचर न्यूक्लियर बैटल कि हो सकता है कि अमेरिका यानी आईसीबीएम रूस के आईसीबीएम यूएसएसआर के आईसीबीएम की वजह से अमेरिका का मिलिट्री स्ट्रेटेजी का चेंज होना पूरे यूरोप की फ्यूचर को उसको न्यूक्लियर बैटल फील्ड में तब्दील कर सकता था एंड कंसिक्वेंटली एंडेंजर्ड अलायंस मैनेजमेंट और पूरी वर्ल्ड लेवल पर अलायंस मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है जी। आगे, फ्रॉम मैसिव रिटेलिएशन टू फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, a nuclear power in charge of an alliance has to deter the opponent and to reassure the allies. इत्तेहादियों को कहते हैं। The alternative to reassuring US allies would have been for Europeans to produce nuclear weapons themselves and create core deterrence themselves, either on a national basis or in cooperation with other Europeans. It also would have meant that the Germans would have gotten a finger on the nuclear बटन, यानी बिल्कुल तैयार थे और ये ऐसा कर सकते थे। For the perspective of the US, nuclear parity and territorial vulnerability required the adoption of a new strategy और अब ऐसा कोई नया सिलसिला न्यू स्ट्रेटजी जो है वो लेकर आए और कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी कॉल्ड फ्लेक्सिबल रिस्पांस। इसके बाद जॉन कैनेडी की एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के सदर होते हैं, इनकी आ जाती है और वो नई स्ट्रेटजी अब डेवलप करते हैं अपने मुल्क के लिए जिसको हम वो फ्लेक्सिबल रिस्पांस की स्ट्रेटजी कहते हैं। Thank you very much, students. Hope you have understand. The topic was a bit difficult with respect to nuclear strategy as a deterrent strategy, but I hope that you understand. Thank you.